Good afternoon, students. Today we will learn the gymnosperms of the chapter 3, Plant Kingdom. Gymnosperm. Gymnosperms mean gymno means naked and sperms means seed. Alright. Here the seeds are not covered with any envelope. The ovules in general plants, if you see in other angiosperms, what happen? The ovules the ovules are covered by the ovary wall. But in case of gymnosperms, ovules are not covered with any ovary wall before or after fertilization. Okay, in gymnosperms what happen? Ovules are not covered with any ovary wall before also and after also fertilization, and they are mainly xerophytic. Xerophytic means they can adapt in very harsh conditions, you can say, where there is no water. All right, and might be in desert also. They can third desert, they can survive in the third desert also. Okay, so their leaves has been modified. According to that, their leaves also has been modified, like thick leaf they have. All right, thick leaf, so that the water loss might be for the thick leaf. What happened? The water loss will be also low. All right, and the stomata is sunken. Stomata also are sunken, so they have modified according to that, according to their habitat. In the harsh conditions, they can survive. And the plant body of the gymnosperms, what happened? The plant body are tall, woody shrubs, but gymnosperms are not seen in herbs. Shrubs might be shrubs, medium and tall. All right, and the main plant body is sporophyte. Sporophyte matlab diploid. I told you it's diploid, 2n, and is differentiated into roots, stems and leaves. All right, here is a diagram I have given here, that in normal what happened? In normal angiosperms what happened? There is the ovules are covered with the ovary wall, but in gymnosperms there is no ovary wall. It is naked. Seeds which are not covered with any envelope comes under this gymnosperm category. As we have discussed, the gymnosperms may be shrubs, medium or tall trees. Here one example is here, the tall trees, redwood tree example. Scientific name is Sequoia gigantea, which is the largest species in gymnosperms. Questions might come in exam, that which is the largest tree in gymnosperms. That is the redwood tree, and the scientific name is Sequoia gigantea. Okay, since it is a large tree, therefore the roots will be taproot, right? Because in the grasses and all we found adventitious root, but in the large trees what happened? We found the taproots. And here what happened? There is a special kind of association is found in gymnosperms in the roots. So the special kind of association, like the roots that is associated with fungus, especially the pinus of gymnosperms, the roots of pinus, they are associated with fungus, that is mycorrhiza. Okay, and another correlate roots. Here what happened? The roots of cycas is associated with blue-green algae, that is cyanobacteria, and which helps in actually nitrogen fixation. The roots can form different kinds of association. In case of gymnosperms, one is mycorrhiza. Mycorrhiza is nothing but is association of the roots of the pinus and the fungus. All right, and another is correlate roots. Here what happened? The roots of cycas is associated with the blue-green algae, cyanobacteria, and that helps in fixation of nitrogen. All right, then comes to the stems. Stems in gymnosperms may be branched and unbranched. The branched one, example you should remember, pinus and citrus. All right, and the stems which are unbranched are seen in the cycas. Okay, and in cycas actually these characters are given in NCERT. That's why I have given the important points here itself. So cycas are the unbranched stems, and here in cycas what happened? There are pinnate leaves. Pinnate leaves I'll show in the next slide how it's look, because in this pinus and citrus there is needle-like leaf, but in case of cycas there is pinnate leaves. All right, so it's given here. Then the next is, some plants of gymnosperms are conifers, which have some special property. In gymnosperms, if we classify gymnosperm, there is a class Coniferopsida. Coniferopsida में जितना भी आपका जिम्नोस्पर्म्स आते हैं वो सब क्या होता है? नीडल लाइक लीव होता है. नीडल लाइक लीव क्यों होता है? बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट दे कैन adapt in the harsh conditions. They have modified the leaves like that. If the heavy snow falls, then what happen? The normal leaves might shed easily, but this needle like leaf, what happen? One thing is that loss of water will be less,
in needle-like leaf. Okay, because the sunken stomata is found in needle-like leaf. And also another advantage is what? When the snow fall heavily, then this needle-like leaf will not shed easily. Alright, so they have adapted in that way. I hope it's clear. These are some pictures of Pinus, Cedrus. Pinus and Cedrus का है needle-like leaf, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम एक दे दिया. फिर साइकस का जो लीव्स है पीनट लीव्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए, ये नीडल नहीं है, पीनट लीव्स जो है ये नीडल लाइक तो नहीं है, बट इट दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड पीनट लीव्स इन साइकस, इट हैज बीन सीन. ऑलराइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? एट मैच्योरिटी लेवल सर्टेन लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था टेरिडोफाइट्स में कि जो मतलब लीव्स होता है ना, उसके ऊपर में कुछ कुछ ऐसा जो स्पोरेंजियम नहीं फॉर्मेशन होता है क्या, तो वो पूरा लिप्स को हम लोग स्पोरोफिल्स बोलते हैं. सिमिलरली इन हियर ऑल्सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे भी ये लोग अपना लिप्स को मॉडिफाइड बना लेता है. जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम मैंने दिया है ना, ये लिप्स मॉडिफाइड बना के ये लोग यहाँ पे स्पोरेंजियम जैसे फॉर्मेशन कर लिया, इसको हम लोग स्पोरोफिल्स बोलते हैं. और फिर ये स्पोरोफिल्स बाद में क्या करता है, एक कम्पैक्टली अरेंज हो जाता है. कम्पैक्टली अरेंज, जैसे कि सेकंड डायग्राम में देखो, कम्पैक्टली अरेंज होके इसको हम लोग बोलते हैं इसको आइडरकोन्स और स्ट्रोबिलाई. ओके, टेरिडोफाइट्स में सेम ही था, लेकिन यहाँ पे कम्पैक्टली अरेंज हो जाता है लिप्स, एंड इसको हम लोग बाद में बोलते हैं स्ट्रोबिलाई, नहीं तो कोन्स बोलते हैं. ठीक है, अभी देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स का. एक्चुअली जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, ये हेट्रोस्पोरस होता है. हेट्रोस्पोरस मतलब मेल गैमेटोफाइट भी फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल गैमेटोफाइट भी फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. ठीक है, प्रोड्यूस स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स, दैट इज माइक्रोस्पोर्स होने से तो मेल है, एंड ऑल्सो लार्जर मेगास्पोर्स. मेगास्पोर्स फीमेल्स होता है. ठीक है, स्पोरोफिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि जो मॉडिफाइड जो लीव्स है ना, मॉडिफाइड लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरेंजियम होता है वो स्पोरोफिल बोलते हैं. और वो ही स्पोरोफिल दो टाइप का होता है, एक तो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो मतलब मेल कोन, ओके, एंड द मेगास्पोरोफिल दैट इज फीमेल कोन. ऑलराइट, मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. कभी कभी क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों मतलब स्ट्रोबिलाई, दोनों मतलब स्पोरोफिल कभी कभी सेम प्लांट में मिल सकते हैं, जैसे कि पाइनस. एंड कभी कभी दोनों डिफरेंट प्लांट्स में मिलता है, मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई और द स्पोरोफिल. एग्जाम्पल साइकस. ऑलराइट, अभी तक आप लोग यही मतलब जो मैंने आप लोगों को समझाया वो थोड़ा आप लोग स्टडी कर लो. हम लोग जो इन लोगों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब कैसे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ है, फिर कैसे मतलब गैमेटोफाइट बना है, मेगास्पोर मादर सेल, वो सब मतलब हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे आराम से. अभी तक के लिए आप लोग जस्ट थोड़ा थोड़ा मतलब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आप लोग जान लीजिए. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, take care and bye bye.